अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, ज़ुहैर हुसैन की जानिब से आप तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में मैं सलाम पेश करता हूँ। PWOA के इस प्लेटफॉर्म से आज मैं आपके हाज़िर खिदमत हूँ और ये हफ्तावार एक प्रोग्राम हम तश्कील दे के आपके लिए लेकर आए हैं और इस प्रोग्राम का मकसद हमारा ऑनगोइंग बेसिस के ऊपर इस प्रोग्राम को हम कंडक्ट करेंगे और इसमें जितने भी कम्युनिटी रिलेटेड इश्यूज हैं, करंट अफेयर्स अपनी रेलेवेंस के लिहाज से है और कोई और दीगर अगर बर्निंग इश्यूज हमारे सामने आएंगे तो हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। हर प्रोग्राम में कोशिश की जाएगी कि किसी मेहमान को आपकी खिदमत में भी लेकर आए ताकि उनकी राय, उनका ओपिनियन, उनके जो मशवरा है और उनकी एक्सपर्टीज हैं उनको हम यूज़ कर सकें और कम्युनिटी सर्विस का ये जो सिलसिला है ये जारी व सारी रहे, क्योंकि हम जब अपने मुल्कों को छोड़ के यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आते हैं तो हम सब शुरू का जो वक्त होता है वो हम सब ने जो स्ट्रगल्स होती हैं उसमें से गुजरे हुए होते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म की और इस प्लेटफॉर्म से जुड़े इस इनिशिएटिव का जो बेनिफिट और फायदा है वो वी कैन ऑल रिलेट टू दैट इन सम सेंस, क्योंकि हम सब अपनी अपनी कैपेसिटी में कभी ना कभी उस सिचुएशन में रह चुके हुए हैं या अभी भी हैं या इस तरह की सिचुएशन में हम लोग आते रहते हैं जहाँ पे हमें किसी की हेल्प की, किसी के एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत पड़ती रहती है। तो इसी नीश और इसी मार्केट को, इसी नीड को कैटर करने के लिए ये प्रोग्राम तश्कील दिया गया है। आज जो हमारा प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में लेके आए हैं उसका उसमें जो मौजूए बहस और जो मौजूए गुफ्तगू है वो इमिग्रेशन से रिलेटेड मामलात हैं और इस सिलसिले में हम अपने साथ एक मेहमान को भी लेके आए हैं और वो अपनी इस फील्ड में जिस मौजू के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे खासी महारत रखते हैं और काफ़ी उनकी एक्सपर्टीज है। मेरी मुराद है जनाब अनील ख्वाजा साहब से और थिंक हायर कंसल्टेंट्स के नाम से वो अपना इमिग्रेशन और कंसल्टेंसी के हवाले से अपना बिजनेस कायम है उनका और वो उसको चला रहे हैं और माशाल्लाह ही इज डूइंग रियली रियली वेल। काफ़ी उनके अच्छे जो रिकॉर्ड्स हैं वो है उनका ट्रैक रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ हिज सक्सेस रेट एक्सेट्रा। तो किसी फर्दर डिले के बगैर मैं अपने जो गेस्ट हैं उनको आप लोगों के साथ शामिल गुफ्तगू और शामिल महफिल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अनील। वालेकुम सलाम ज़ुहैर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? बस ठीक ठाक जी। दैट्स गुड। खुश आमदीद मैं कहता हूँ आपका हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और आप यहाँ पे आए हैं हमसे गुफ्तगू और बात करने के लिए। इमिग्रेशन की जब हम बात करते हैं तो एक बड़ा जबरदस्त सा ये एक टॉपिक है। इट हैज ऑलवेज बीन इन टू आवर कम्युनिटी डिस्कशंस और जब हम लोग शुरू में होते हैं तो जब जैसे मुझे याद है आई केम टू ऑस्ट्रेलिया इन 2007 इनफैक्ट, तो 2007, 8, 9, 10 तक के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे दे वर लाइक ऑन माय फिंगर टिप्स लेकिन उसके बाद once I got through those initial years of struggle, फिर जब आप क्या परमानेंट रेजिडेंस और सिटीजन हो जाते हो उसके बाद यू डोंट पे सच अटेंशन, लेकिन आप क्योंकि इस चीज को प्रोफेशन बनाए हुए हैं
आपकी ऑब्वियसली ऑन डे टू डे बेसिस के ऊपर आप अपने आप को अपडेट भी रखते हैं, और क्योंकि आपकी फील्ड है तो यू हैव टू नो दिस। बिल्कुल। जब इमिग्रेशन की बात करते हैं तो क्या आप आजकल का ये जो करंट क्लाइमेट है इसके हवाले से क्या एक ओवरऑल पिक्चर आप हमें और हमारे नाज़रीन को दीजिए, उसके बाद we would probably tap into some specific areas. जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर टुडे। देखें, इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो क्वाइट अनसर्टेनिटी है एज पर द करंट सिचुएशन। स्पेशली अगर आप देखें तो कोविड-19 सिचुएशन है, एंड देन इस पेंडेमिक की वजह से दुनिया में जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, लाइक जितने भी ममालिक हैं जो इमिग्रेशन के लिए मशहूर हैं, वो क्वाइट पैनिक कर चुके हैं अभी। स्पेशली उसमें ऑस्ट्रेलिया अभी सरफहरिस्त है। सो ऑस्ट्रेलिया का ये है कि ऑब्वियसली दे नीड टू सी द वर्ल्ड डायनामिक्स के किस तरफ दुनिया जा रही है, प्लस उनके इंटरनल जो भी रिक्वायरमेंट्स या नीड्स हैं उसको मीट करने के लिए हमेशा वो इमिग्रेशन के अंदर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ चेंजेस जो है वो लाते रहते हैं। इनिशियली जैसे आपने बात की 2006-7 की, तब पॉइंट टेस्टिंग एक डिफरेंट उस पे था, 120 पॉइंट्स इफ यू रिमेंबर। देन इट कम्स टू 60 पॉइंट्स, फिर वो 65 पॉइंट्स पे आ गया। तो ये चेंजेस होती रहती हैं। अब जो करंट सूरत हाल है, जो सिचुएशन है, इसके अंदर the issue is like quite uncertainty in terms of policies, and बहुत सारे जो different options हैं immigration के वो quite limited हो गए। एक जो जनरल स्किल माइग्रेशन है उसकी अगर हम बात करें तो पॉइंट टेस्टिंग जो है बहुत हाई है, यू नीड वेरी हाई पॉइंट्स टू मीट दैट रिक्वायरमेंट। ऑन दी अदर हैंड अगर आप स्टेट स्पॉन्सरशिप की बात करें तो ये जो टाइम है वो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टाइम है, तो बहुत सारे स्टेट्स का जो है वो कोटा फिनिश हो चुका है। तो जनरली उन्होंने भी अपने स्टेट्स की जितनी भी ओपनिंग थी फॉर इमिग्रेशन कोटा वो बंद किया हुआ है, एंड दे आर स्लोली ग्रेजुअली ओपनिंग है, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। राइट। तो सूरत हाल क्वाइट अनसर्टेन है, आप बॉटम लाइन में इसको ऐसे कर सकते हैं। राइट, राइट, राइट। तो अभी जितने यहाँ पे लोग इस वक्त मतलब मौजूद हैं, और अगर मैं सोचने लगूं तो मुझे देर नहीं लगेगी, अपने इमीडिएट सर्कल में ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो माशाल्लाह यहाँ पे आके उन्होंने डिग्रीज वगैरह की हैं, 70-80 हज़ार डॉलर का पूरी कोर्स उन्होंने किया हुआ है, एंड नाउ दे आर रियली स्ट्रेस्ड आउट बिकॉज कि अब यहाँ मेलबर्न में तो कुछ हो नहीं रहा। तो अब वो जो स्टेट स्पॉन्सरशिप का जो एक बड़ा पॉपुलर वीजा रहा है पिछले काफी सालों में, उसके मुतालिक आप कुछ बताएं। रिसेंटली व्हाट आई हर्ड and what I've seen is some of my friends, they were going to Tasmania to get that. अभी आप बताइए कि इस वक्त कौन सी वो स्टेट है जहां पे खुला हुआ है स्टेट स्पॉन्सरशिप का वीजा? जी, बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने बताए हैं। देखें, स्टेट्स थ्रू आउट द ईयर ओपन होते हैं, कुछ स्टेट्स का कोटा फिनिश हो जाता है एंड दे नॉर्मली वेट फॉर द नेक्स्ट ईयर टू रीओपन द स्टेट स्पॉन्सरशिप। आजकल जो है, जो मेनली जो मोस्ट कॉमन स्टेट्स हैं वो तस्मानिया एंड नॉर्दर्न टेरिटरी है। दे आर ओपन फॉर मोस्ट ऑफ द ऑक्यूपेशंस, बट उन्होंने भी अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको काफ़ी स्ट्रिक्ट किया हुआ है। स्पेशली सबसे पहले हम तस्मानिया को लेके चलते हैं। अगर तस्मानिया में आप जा रहे हैं तो यू नीड टू स्टे देयर फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स। आप अपने नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में काम करें फुल टाइम, देन ओनली दे मे कंसिडर यू फॉर 190। अदरवाइज अगर आप किसी भी ऑक्यूपेशन पे काम कर रहे हैं और आप 6 मंथ्स वहाँ स्टे कर रहे हैं तो फिर आप 491 ऑप्शन लेते हैं, जो कि टेम्पररी ट्रांजिशन है टुवर्ड्स परमानेंट रेसिडेंसी। So that 491 is a regional skill state sponsorship, जिसमें आपको फिर रीजनल एरिया में 3 साल और रहना है, रीजनल एरिया में ही 3 साल और काम करना है, देन ओनली यू वुड गेट दी फाइनल जो आपका परमानेंट रेसिडेंसी है वो आपको मिलता है। सेम गोज विद एंटी। एंटी ने भी रिसेंटली बहुत ड्रास्टिक चेंजेस किए हैं, स्पेशली दोज हु ऑन अ स्टूडेंट वीजा। आपके पास 2 स्ट्रीम्स हुआ करती थी। पहली स्ट्रीम ये थी कि अगर आपने काम किया है, अगर अपने नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में, तो 6 मंथ के बाद यू कैन अप्लाई फॉर 491, रिगार्डलेस ऑफ आप स्टूडेंट वीजा पे हैं या ब्रिजिंग वीजा पे या किसी भी वीजा पे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट वीजा पे हैं, दे कैन नॉट अप्लाई ऑन द वर्क स्ट्रीम, दे नीड टू स्टडी फॉर होल 2 years
उसके बाद वो टीआर डालेंगे, जब उनके फुल वर्क राइट्स होंगे देन ओनली दे कैन अप्लाई फॉर दैट 491। 190 का स्टिल वो वादा नहीं कर रहे हैं। सो बहुत सारे स्टेट आपको दे आर कन्वर्जिंग यू टुवर्ड्स 491 ताकि आप रीजनल में या रीजन के अंदर ही रहें जो आपके रिमोट एरियाज हैं, रादर देन यू गो इनटू मेन सिटीज लाइक सिडनी, मेलबर्न या जो दूसरे मेन सिटीज हैं लाइक ब्रिस्बेन। जी तीसरे नंबर पे आपने रिसेंटली सुना होगा, जो एक आध वीक पहले ही न्यूज ब्रेक हुआ था, न्यू साउथ वेल्स 491। जी रातों रात लोग जो हैं वो न्यू साउथ वेल्स मूव होना स्टार्ट हो गए। तो उन्होंने भी एक डिफरेंट गेम खेला है, ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने ओपन किया एंड देन इमीडिएटली दे चेंज द पॉलिसी कि जो अभी मूव हो रहे हैं उनको हम नहीं देंगे, उनके लिए आपको 3 to 6 months रीजनल एरिया में रहना पड़ेगा, अपने टाइज को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, एंड देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर न्यू साउथ वेल्स 491। राइट। और लास्ट डेट ऑब्वियसली फॉर दिस ईयर इज 26th of June। तो उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर का कोटा आएगा देन ऑब्वियसली दे कैन अप्लाई ऑन दैट। तो सो 26th of दीज आर June, जी sorry to cut you off, 26th of June 26th of June जी से पहले, which is only जी like 3 days now, 3 uh, days जी जी जी। तो अगर कोई उससे पहले वो करना चाहता है उस चीज के लिए, तो क्या उसके requisites हैं जो इमीडिएटली उनको अगर वो पूरे करें और कल सुबह वो अनिल ख्वाजा को फोन करके उनके ऑफिस में आ जाएं, तो how can this be done? All right, so three important prerequisites like requirements. First is obviously you must have a skill assessment. Second ये है कि आप एटलीस्ट उस रीजन में या उस रीजनल एरिया में न्यू साउथ वेल्स के 3 to 6 months से रिसाइड हो, लाइक आपको रेसिडेंसी टाइज जो है वो बहुत स्ट्रांगली प्रूव करने हैं। Right, एंड थर्ड आपके पास ऑब्वियसली मिनिमम 50 पॉइंट्स होने चाहिए, क्योंकि right, स्टेट गिव्स यू अनदर 15 पॉइंट्स, सो यू मस्ट हैव एटलीस्ट मिनिमम 50 पॉइंट्स। सो right. तीन रिक्वायरमेंट्स अगर मीट करते हैं तो वी कैन लॉन्च योर एप्लीकेशन very next day or early in the morning. Yeah. अच्छा अच्छा, तो अब वो जो 491 है, whilst my understanding from the surface is जो भी आपने बातें बताई हैं, 491 is sort of a pathway towards 190, but then they are not guaranteeing 190, मतलब ऐसा ही है? देखिए 190 जो है वो परमानेंट स्टेट स्पॉन्सरशिप है। So Right, once you apply for 491 और आपको अगर 491 ग्रांट हो जाता है, so then you cannot apply 190। okay, Unlike आपने जब आपका यह पहले जो रूल्स है जो आप जिसको पॉइंट आउट कर रहे थे कि अगर आप 489 लेते हैं या उससे पहले अगर 487 हुआ करता था, तो अगर आप वो वीजा लेते हैं तो देन स्टिल यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई फॉर 190 अगर आप रिक्वायरमेंट्स को मीट कर जाते हैं। पर यहाँ अब इमिग्रेशन ने एक चीज जो है वो एक लिमिट लगाया हुआ है कि अगर आप 491 ले लेते हैं, so you cannot apply for 190, then you have to stay in a regional Australia for 3 years। for 3 और 3 years. years आपको काम भी करना है, ठीक है। तो और ये आप उनकी रिक्वायरमेंट है। यहाँ कहीं पे भी काम कर सकते हैं आप? किसी भी ऑक्यूपेशन पे काम करें, लेकिन इसका मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड है दैट इज 53,900। सो दैट दैट यू नीड टू अर्न इन अ ईयर। सो Right, रीजन में आपको पता है जॉब्स आर रियली डिफिकल्ट, तो काफी डिफिकल्टी होगी लोगों के लिए जो 491 भी लेंगे। That is what it is. So if you don't have any option, you have to go with 491। right, right. क्योंकि इवन हम अभी सवालों की तरफ भी जाते हैं, जो सवालात आ रहे हैं हमारे पास। when I try and look back, हमेशा से इनका जो फंडामेंटल आइडिया रहा है वो यही रहा है कि भाई लोगों को ये जो पॉपुलेटेड सिटीज हैं इनमें से निकाल के जो लेस पॉपुलेटेड सिटीज है वहां पे भेजा जाए। अब अनफॉर्चुनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहां पे अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा नहीं है, और जिसकी वजह से जो हमारे जो पाकिस्तानी इंडियन कम्युनिटी वास्ट है, उन लोगों को उस तरह के इलाके ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करते। राइट, तो हमेशा से ही, और अभी भी ये जो 491 को वो ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली दैट हैज द कंडीशन कि आपको 3 साल वहां पे रहना है, आपको वहां पे जॉब करनी है। तो दिस इज their background fundamental idea is कि इन लोगों को मेलबर्न सिडनी से निकाल के इन रीजनल इलाकों में लेके जाया जाए। Okay। would that be fair to say कि ये ऐसा करना चाह रहे हैं?
जी, बिल्कुल एब्सोल्युटली ज़ोहैर, आप देखें तो डायनामिक्स यही है फॉर लास्ट मैनी इयर्स। जितने भी मैं पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म से जस्ट लाइक जैसे हम यहाँ कर रहे हैं, मैं जब भी इन्फॉर्मेशन सेशंस में जाता हूँ, मैं यही कहता हूँ कि यू मस्ट नीड टू लुक फॉर अ रीजनल एरिया, क्योंकि इनका फोकस रीजनल में ही है। दे सिडनी, मेलबर्न एंड दीज़ बिग सिटीज़ आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड। दे डोंट वांट मेनी पीपल हियर। Right. अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए रिसेंटली जो कोविड-19 से पैंडेमिक से पहले भी जो सिचुएशन बुश फायर का था, तो आपको पता है मेनली इट वाज़ ऑल ओवर द रीजनल ऑस्ट्रेलिया। तो Right. न्यू साउथ वेल्स से लेकर विक्टोरिया रीजन है वो ऑब्वियसली अफेक्ट हुआ है। सो गवर्नमेंट का यही फोकस है कि दे वांट पीपल टू गो डाउन टू दोज रीजनल एरिया, उसको वो वापस आबाद करें। और दैट इज वेयर उन्होंने ये सारे रीजन्स को अब ओपन किया है ताकि Right. लोग रीजनल एरियाज की तरफ ही जाएं। की तरफ जाए। ओके, ओके, ठीक है। हमारे पास रोजीना लखानी का सवाल है, व्हाट इज द करंट सिचुएशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑफशोर? Right. So at the moment, the visas are pretty slow. Processing is a bit slow, but they are slowly, gradually giving the visas. Despite there is a travel restrictions or borders are closed. So you need to they're looking into that circumstances as well, and they're trying to wrap up as much as they quickly they can do it. But at the moment, the things are pretty slow. So they're monitoring the situation. But if you have lodged an application, you're already in the process of lodging the application, you can do so. Okay, so they're not stopping you from lodging the application, it's just that No, you they are not. delays in the processing time. Absolutely, absolutely. Okay, okay. We'll move on to the next question. This is by Nida Kalwani. She's like, if your student visa refuse, if your visa is refused and you apply for AAT, but you already complete 1 year studies, so any other chances to visa? See, it depends on which state you are. If you're in Tasmania, then you can definitely apply for the 491 visa, subject to if you're meeting the requirement. Otherwise, obviously, you need to study for 2 years. All to 2 years, once you study, you can apply for the nomination. क्योंकि देखिए जोई ये थोड़ा सा जो इनका सिचुएशन है दैट इज मोर कॉम्प्लेक्स। शी इज Right, 48 सेक्शन 48 बार एज वेल है, क्योंकि अगर आपका वीजा अगर टेम्परेरी वीजा रिफ्यूज हो जाता है ऑस्ट्रेलिया में, so you cannot apply any other visa while you're onshore. You have right, to go offshore. और अगर ऑफशोर का आप कितना रिस्क ले सकते हैं डिपेंड्स ऑन यू, बिकॉज yeah, ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस बॉर्डर्स क्लोज हैं। तो आप एक बार जा चले तो जाएंगे, लेकिन वापस आना इट्स अ नाइटमेयर। So right, generally हम क्या करते हैं, हम bridging visa B, if you wanted to take a bridging visa, you need to take a bridging visa B for whole 1 year. So अगर आप stuck भी हैं तो एटलीस्ट आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटी होगी वापस आने की अगर ट्रैवल बैन फिनिश होता है। So don't go with a lesser bridging visa if you're planning to go overseas. right. So if your temporary residence visa gets refused, does that does that impose or automatically calls for the no further stay condition? That's right. So it's called Section 48 bar. So you cannot apply any visa while onshore. You have to go offshore. No visa. Anyways, there are few visas like partner visas and protection visas, but Yeah, you hardly get such cases here. yeah. All right, yeah, understand. Okay, हमारे पास सवाल है परवेज पीरजादो से. How do I know if I qualify for subclass 858? All right, so 858 is a distinguished talent visa, जो काफी आजकल बड़ा hot है, and the requirement is generally अगर आपने देखा हो तो जनरल स्किल माइग्रेशन जो है वो अप टू 45 years है। आप 45 years के बाद जो है वीजाज अप्लाई नहीं कर सकते। So they have introduced a distinguished talent visa that you can apply up till you are 55 years old. So So इसमें get couple of streams हैं। right. 55 years old, yes. No, but So then couple of streams हैं। आप दे सकते हैं उसके डिस्टिंग्विश्ड टैलेंट के? जी सॉरी, आपकी आवाज कट गई, आप रिपीट कर दें प्लीज। उस डिस्टिंग्विश्ड टैलेंट के कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल दे सकता हूँ। 3 स्ट्रीम्स हैं उसकी। एक रिसर्च स्ट्रीम है, 2 और स्ट्रीम्स हैं जिसके अंदर अगर इफ यू आर एक्सेप्शनल इन योर फील्ड, फॉर इंस्टेंस एक स्पोर्ट्समैन है
if they're exceptional sportsmen and they're renowned around the world or national level pe they're pretty renowned, and so they can apply for that visas, but you need a sponsor, you need an Australian sponsor to do so. So say आप एक cricket में बहुत exceptional कर रहे हैं in Pakistan, and a cricket club in Australia wants to take you for BBL or for a longer run, like for a permanent visa, they Right. can sponsor you for 858. But mostly जो people 858 apply कर रहे हैं, क्योंकि 858 is an onshore one. Distinguish में दो होते हैं, 1 to 4 visa एक 858 है. 858 is for onshore, 1 to 4 is for offshore. So Okay. 858 के लिए you normally जो वो लोग हैं जो PhD कर रहे हैं या Master of Research कर रहे हैं, and they're exceptional in research and all, the university professor or those who are their mentor or supervisor, they can sponsor them for 858. And it's a Right. direct permanent residency Excellent. Excellent. application. Yeah, Excellent. So you can assist in such visa, Anil? absolutely. We have a couple of staffs who are on 858 as well. So we have recently done heaps of. Fantastic. So if you can come down to our office, we are more than happy to give them, whatever advice Yep. they needed. Yeah. Maybe towards the end of the program, we will ask you to share your office contact number, your details, etc., so people can also reach out to you. There was another question. Sure. Was there? Do you deal with business? Sorry, it's from Komal Bajwa. I'm onshore in Perth. I'm planning to apply for Canada PR. What do you say? What do you say, Anil? To be very frank, Not no very idea well. about Canada. Yeah, so we are not doing a Canadian immigration consolidation at the moment. But if you're in Perth and you have studied for 2 years, then you can apply the permanent residence in Perth. You might be eligible for Western Australian under the Western Australian skill list. So I would suggest you to go further with the Western Australia permanent residency. But if you're eyeing for a Canada PR, you obviously need to consult Canadian migration agent who can help you out. Right, right. So Mm. can you, Anil, assist people from other states or not? We definitely we have heaps of clients from Queensland. We have heaps of clients from Perth. So all over Australia, basically. So Oh, even if they can contact us, we're more than happy to assist you anywhere. so Yeah. a consultant doesn't need to be in that particular state to be applying. No. No, okay, okay. So we do the Zoom meetings, we do through the email correspondence. Everything is digitized now, so you don't need to be in person out there to give the advice. Yeah. 100%. Okay, I hope, Komal, that answers your question. We have our next question by Alia Ali. Alia goes, do you deal with business visas? We do. There are a couple of businesses, but it's a whole, a bit, sort of, Pandora box for the business. There are a couple of, subclasses you need to meet those requirements. So yeah, more than happy to discuss the case individually, and yeah, then we can definitely go further from there. Yeah. Okay, okay. Cool. Now, I have always wondered why boys and girls from Pakistan, especially because I don't know much about India, on how and what sort of mind frame people come in from India. But I know a lot of Pakistani boys and girls. They come in, and there are only few selected career paths or lines that they pick. One is accountancy, then your IT, then your finance, all these white collar jobs. And I've always wondered, why don't people come for these trade related courses? What's your take on that, Neil? I think there are two kinds of obviously there are two kind of people who are coming to Australia. One is obviously they're career oriented. They're backed by their families. They know their finances are intact. So they normally go with the master's studies like say accounting, IT, or if they want to do engineering and so on. So these kind of people obviously they're not first preferences to go with the permanent residency. But if you're coming from Pakistan with a mind frame that you need to get a PR, then I would suggest, as you told, that they can also look into the trade courses.
Because hota ye hai कि once you do the masters while you're on TR, then you come up with an idea कि चलें अब trade course कर लेते हैं, masters कर लिया, we're not getting the PR, let's do the trade course. So it's better if they make up their mind they wanted to get a permanent residency. So it's better to do a trade course. And obviously career wise, it's not that bad. Most of the tradies they earn more than what the professional jobs are. So Right. it's more common in Australia. The tradies are more in demand than a professional who has done a PhD. So obviously हमें इनको guide करना पड़ेगा. We need to consult them कि Australia is a different ball game. All Western countries especially are different ball game than Pakistan because हमारी mentality पाकिस्तान में कुछ different होती है. Yeah. Say if you're a hairdresser, obviously you don't feel like to be a hairdresser in Pakistan. Yeah. But Yeah. if you're a hairdresser here, it's more sort of like you can be in stylist, you can be in hairdresser, you can be a barber, you can choose any occupation within that hairdressing. So it all depends. So मेरा take यही है कि trade qualification is good if you really wanted to get the PR quickly. Plus, money wise and the career wise, it's pretty good as well. Now, because the skills list, it's a very long list. Yeah, there are like Yeah. so many professions in there. But then I to this date, I fail to understand why everybody just goes for those three, four, five career paths. Anyway, I've always tried to emphasize on that to my friends and my circle that even if you've come in, look for an option or a chance to change your course, get into plumbing, electrical, architect, you name it. Like the list, itni badi wo list hai, lekin unfortunately we're just stuck to those few occupations. हमारे पास एक और सवाल आया है शुएब अशरफ की तरफ. How much is your fees to discuss the case? आप जो है वो पहली बात सुनने के भी पैसे लेते हैं नहीं? There is an initial consultation, but what we can do with the PWAO platform, especially the digital platform, we can do a free initial consultation if you refer or if you have seen this Facebook Live or even the recording. So if you refer through the PWOA, we'll give you the free initial consultation. Right, So right. normally we charge $110 for business visas and $55 for the permanent residency consultation. Okay, okay. But I guess if you are genuinely interested in sorting out your future, and it's costing you $55 for initial professional advice, then I guess it's worth it, isn't it? Absolutely. I do agree on that. Yeah. We have Parvez Sahab is asking, can we email you? So Parvez Sahab, towards the end of the show, we will share the details of Aneel and his business. So stick around for that. Yeah. अब ये जो लोग कोरोना की वजह से जो आ रहे हैं वापस आना है जिन लोगों को, उसके मुतालिक मतलब क्या आप कहेंगे? वापस आए, वापस नहीं आए, वहीं पाकिस्तान में ही रहें, क्या करें? देखिए इंटरनेशनल बॉर्डर्स तो भी फिलहाल बंद है स्पेशली फॉर ऑस्ट्रेलिया जैसे कि जो टेम्परेरी वीजास पर है ओवरसीज permanent resident or citizens because still they are allowing they need to quarantine and then they can go back to their norms, but international students or temporary visa holders they're very exceptional circumstances they're allowing, so obviously उनके पास कोई option नहीं है, they have to stay there. Right. एंड जो न्यूज़ है वो क्वाइट इतनी एनकरेजिंग नहीं है. आपने खुद देखा है कि विक्टोरिया में सेकेंड वेव आ चुका है, एक क्वाइट बिग हाइक हुई है नए केसेस की, प्लस न्यूजीलैंड में भी कुछ केसेस आ गए हैं. तो आई थिंक ये अनदर 6 months तो डेफिनेटली चलेगा एंड दैट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट द ट्रैवलर्स. एंड आई थिंक it's I would suggest you to keep stay there if you are in Pakistan. वहीं रहें फिलहाल क्योंकि there is no point आप travel तो कर नहीं सकते. So meanwhile मैं अपने client से क्या कह रहा हूँ कि if they are in Pakistan और अगर पाकिस्तान के हालत बेहतर होते हैं, so they can start doing their PT English practice. They can do the NATI practices. Everything is online. You can get the Zoom classes, everything. So why not utilize that time building or preparing to get more points for the permanent residency?
एंड साथ साथ आप जो है अगर कहीं आपको जॉब लग जाता है तो स्टिल डू 6 months ऑफ जॉब, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, सो यू नो आप जॉब कर सकते हैं, अपने प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. यू नेवर नो, कोई स्टेट स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटी आपको आ जाए, यू कैन अप्लाई. राइट राइट. ये शोएब साहब फिर सवाल कर रहे हैं कि इज द फैमिली बैलेंस स्टिल वर्किंग? Yes, so that is mainly for the parent visas where there is a family balance needs to be done. So I think अगर वो parents visa की बात कर रहे हैं तो हाँ जी, अभी भी family balance important है, because you at least need to have 75% of your siblings or your kids to be a permanent resident Australian citizen in order to apply for the parents visa. ओके ओके. जिब्रान कह रहे हैं कि is there any idea when students will allowed to return back to Pakistan? I think as we discussed, 31st July तक तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है. 31st July के बाद आई थिंक परहैप्स गवर्नमेंट वुड कम अप विद अ न्यू प्लान. तो मेरा पर्सनली ये है कि ओवरसीज स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी टफ होगा पाकिस्तान से आना अंटिल आई थिंक एंड ऑफ दिस ईयर से पहले. तो इट्स गोना बी रियली टफ फॉर देम. सो दिसंबर तक तो ऑब्वियसली कोई मुझे नहीं लग रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगा ट्रेवल करने के लिए. राइट राइट. ओके कूल. अच्छा, ये कुछ लंबा सवाल है. अंकित कक्कर की जानिब से, it was actually I want to know about JRP. I already finished my hours in 9 months, but still online portal showing 0. I send them mails, but they reply me they are busy because of high application. So what can I do because I already finished 9 months? All right, so the job ready program is a second stage skill assessment for trade qualifications. So normally अभी हुआ ये कि TRA ने अपना प्लेटफॉर्म और जो ऑनलाइन पोर्टल है उसको चेंजेस किया है, and they want all the documents needs to be uploaded to the portal. Right. So if you haven't uploaded your documents, it's better you should upload and then email to jrpinquiries@desc.gov.au. Because I've recently done lots of emails to the TRA and they are quite responsive. So I think once you'll upload everything, you should email, or if you have any issues, you can just contact us. I'll give you the email ID to contact the TRA directly. And once they have your query in front of them, फिर I believe कि वो आपके पोर्टल में जो भी hours है, जो भी add on करना है, they will do it. Yeah. Right. Okay. हम जब पाकिस्तान से यहाँ पे आते हैं अनिल, तो हमारी जो इंग्लिश होती है वो इंग्लिश हमें कितना हेल्प करती है जब हम यहाँ पे आते हैं. उस इंग्लिश में हमारा जो एक्सेंट होता है, क्या वो जॉब वगैरह ढूंढने में, लोगों से बात करने में, और हम कितने वेल इंटीग्रेटेड हैं विद द ऑजी कल्चर, और कितना हमें हमारी लोकल चीज़ों के बारे में पता है. क्या इन चीज़ों की भी कुछ सिग्निफिकेंस है when you are, as soon as you come and when you are out in the field hunting for a job, looking for work, looking for a reference, क्या ऐसी चीज़ें आपको हेल्प आउट करती हैं? देखिए डेफिनेटली करती हैं. एक बहुत अच्छा सेइंग है कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल पासपोर्ट. सो ऑब्वियसली इंग्लिश स्किल्स जो होते हैं वो आपको इवन ऑस्ट्रेलिया और अराउंड द वर्ल्ड हो, अगर आपकी स्किल्स अच्छे हैं तो दैट विल हेल्प यू आउट इंटीग्रेटेड और मर्ज इनटू द स्पेसिफिक कल्चर, और जो भी उनका जो कंटेम्प्रेरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट करने के लिए ये सबसे पहली स्किल जो आपकी होनी चाहिए. अब जो लोग ऑस्ट्रेलिया आते हैं, कपल ऑफ थिंग्स, वो काफ़ी चीज़ों में ये गलती कर देते हैं कि वो मिंगल ऑन नहीं होते विद, दे डोंट सोशलाइज विद अदर नेशनलिटीज, स्पेशली ऑजीज या जो भी डिफरेंट कंट्रीज के नेशनल्स यहाँ पर हैं उनके साथ. They stick to their own original the community. Like अगर हम पाकिस्तानी हैं तो हम पाकिस्तानियों के साथ स्टिक हो जाते हैं, या हम ज़्यादा मोस्टली इंडियंस के साथ स्टिक हो जाएंगे. तो हमें अपना जो नज़रिया है उसको थोड़ा ऑब्वियसली तब्दील करना पड़ेगा. वी नीड टू सोशलाइज इट.
एंड जब आप सोशलाइज करते हैं तो आप बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों को सीखते हैं. फॉर इंस्टेंस अगर आपका कोई ऑजी फ्रेंड है या आपका वर्क प्लेस पे कोई ऑजी फ्रेंड बनता है, सो ही विल और शी विल लेट यू नो कि क्या चीज़ें हैं जो उन्हें अच्छी लगती हैं या क्या चीज़ें उनके लिए ज़्यादा एक्सेप्टेबल है आपकी उनकी कम्युनिटी के अंदर. सो दैट गिव्स यू मोर सॉर्ट ऑफ मोर इंसाइट इनटू दैट वन कि जब आप जॉब्स के लिए जाएं या आप अगर किसी चीज़ के लिए जा रहे हैं तो किस तरह से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकें. सो आई वुड डेफिनेटली सेकंड व्हाट यू हैव सेड कि हाँ आपको इंटीग्रेट होना चाहिए और ये बहुत इम्पोर्टेंट है. राइट. क्योंकि मतलब यहाँ पे जब आते हैं तो ऑजीज दे लव दिस स्पोर्ट्स यार. ऐसे में अगर जितने हमारे बॉयज आते हैं तो वो आके अगर मतलब फुटी में ही अपने आप को इन्वॉल्व कर लें, राइट. क्योंकि आई फील कि अगर बॉयज अपने आप को और इवन गर्ल्स भी फुटी में थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट लें तो देयर आर सो मेनी अदर प्लेटफॉर्म्स एंड एवेन्यूज दैट विल ओपन अप फॉर देम. क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि जो हमारे सोशल और जो रिलीजियसली यू नो वी हैव सर्टेन डूज एंड डोंट्स, उनकी भी गुंजाइश है आप उनकी पासदारी करते हुए भी अपने आप को जो इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन एक बड़ा एक कोर इशू है इन लोगों का, ऑजीज का, बाकी मुल्कों से आने वाले लोगों के. यार ये लोग इंटीग्रेट नहीं होते हमारे साथ. आ तो जाते हैं, रहते हैं, इनको जॉब भी चाहिए, वीजा भी चाहिए, हेल्थ केयर भी चाहिए, सेंट्रलिंग भी चाहिए, लेकिन इंटीग्रेट नहीं करते हैं. तो उस इंटीग्रेशन की वजह से देयर इज अ होल हीप ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट वी मिस आउट ऑन. क्योंकि as soon as we are mingling, it's always about the right timing and right people. So if you mingle with the right people, then opportunities come about. You know, you can switch your career. क्योंकि अगर कोई employer चाहे, right, they can do anything still in Melbourne too, can they? Or can they not? Absolutely, they can definitely because if your employer is an Aussie or he's an Australian citizen, he can sponsor you in their businesses. Right. And as you told that कि footy है और ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर mingle on कर सकते हैं with our own limits, so we have to because we need to build the bridges. That's what we have learned from our religion, from our culture. कि you need to build bridges. It's a global village. If you be in a stereotype or you just keep yourself to certain community, then you would not grow. ये उनके लिए भी है जो कि परमानेंट रेसिडेंट हो चुके हैं या सिटीजन हैं, उनके लिए भी यही बात है कि यू नीड टू बिल्ड द ब्रिजेस. सो अगर वो करेंगे तो जो न्यू कमर्स आएंगे वो उनको देख के ऑब्वियसली दे विल हैव मोर कॉन्फिडेंस के हम भी कर सकते हैं. Like they can go around, go into the footies, or they can go into the matches like the say Boxing Day agar match hai, so they can go with to watch Australia versus England. They Yeah. don't need to wait for a Pakistan match to be happen in Melbourne to go down there and watch that match. So if you Yeah. go down there, cheer for the Aussies because that's where you're earning. So Australia is your second home now. So if you cheer and mingle around and get integrated yourself into this country, then sky is the limit. Their opportunities are immense. And I have मैं तो खुद इस चीज का मैंने ये चीज देखी है और मैंने उसको किया हुआ है और मेरा एक्सपीरियंस है इस चीज का. एंड आई थिंक जोहर आपका भी ऑब्वियसली आप भी इस बात को डेफिनेटली सेकंड करेंगे कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको और अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं. Gee, sir, I mean, you know, I've come a long way, and I've experienced it firsthand. कि जहाँ पे if you are there at the right time with the right attitude, right, with the right approach, you know, people will offer you things, people will do things for you, and opportunities would come, and it's about you grabbing the opportunity. Or next thing you would know, okay, you've come through, you've overcome any PR issue, any visa issue. लेकिन you need to develop yourself, अपने आप को develop करना, constantly अपने ऊपर काम करना, अपनी language को. क्योंकि you know, when you go out, we don't use sign language unless you are deaf or whatever, right? Everybody speaks, and the minute you have a same wavelength, people will listen,
right? How many boys do you know or I know have gone on to, businesses and gone in and spoken with confidence to the person, whoever comes to their face, that I'm so and so, I'm looking for work, but नहीं करते हैं क्योंकि एक confidence नहीं है, भी पता नहीं यार मैं क्या बोलूंगा, वो क्या कहेगा, and all the rest. So ये जो अपने आप को develop करना है, that is very 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 important. I mean, जितने भी हमारे टीन्स हैं, यंगस्टर्स जो यहाँ पे हैं, स्ट्रगलिंग, मतलब उसमें फेज पे से गुजर रहे हैं, इसको मतलब अपॉर्चुनिटी गुजरें, opportunities को समझें, develop yourself, and then obviously come see professionals like Aneel, who will then guide you through the right process on how to get where you want to get. Obviously, अगर आप चाहते हैं कि आपको इस मुल्क की शहरियत और permanent residence मिले, you need to comply with the laws, with the rules, and you need to be at best of your game. तभी ये है कि मेरे अब्बा कहा करते थे कि बेटा it's survival for the fittest, कि जो सबसे ज्यादा फिटेस्ट है उसी का सर्वाइवल है. इफ यू सबसे ज्यादा फिटेस्ट नहीं हो तो फिर बेटा छोड़ दो इस बात को. So Aneel, was great talking to you. Thank you very much for coming out here. जाने से पहले हम ये करते हैं कि आप अपने बिजनेस का एड्रेस वगैरह, फोन नंबर, ईमेल वगैरह बता दें ताकि सब लोग उसको सुन लें. और मे बी जब ये इसकी हम एंड कर देते हैं तो कमेंट सेक्शन में भी हम पोस्ट करवा देंगे उसको, ताकि if anybody wants to get in touch with you, they can. Sure. Thank you so much first, Zuhair and Amin, for inviting me on this show. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इंशाल्लाह हम फर्दर भी और डिस्कशंस को करते रहेंगे. जो टिकर है उस पर ऑब्वियसली हमारी डिटेल्स आई थिंक ऑन गोइंग है, लेकिन मैं आपको फिर भी अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बारे में बता देता हूँ. सो वी आर बेस्ड इन मेलबर्न, Suite 413, level 4365, Little Collins Street, Melbourne. And you can contact us over the phone as well. Our phone number is 0435600610. And you can also email us at applications@thinkhire.com.au. जो भी आपकी queries हैं, you can always shoot us an email, you can call us, and we are more than happy to assist you in any matter, especially when it comes to the immigration and related issues. I think Zuhair मोहम्मद अमीन ने एक सवाल पूछा है, तो अगर हम ले लें. जी बिल्कुल, इनका सवाल क्यों नहीं लेंगे, मतलब. How many points required for trade courses, suppose tiling, plastering and painting? All right, so I mean, at the moment, all occupations are on 85 points. 85 points से नीचे किसी को भी invite नहीं आ रहा है. So 85 points के लिए obviously you need to have at least a job ready program. आपका English scores at least you need to have 7 each with NATI, or if you're exceptional enough you need to get 8 each or equivalent PTE. So ये सब करने के बाद जब आप 85 points पे आएंगे तो you have better chance to go with 189. Otherwise, there are alternate options are there. For instance, you can go with 491, जिस पे मैंने और ज़ुहैर ने अभी initially बात की थी. You can look for a state sponsorship. को काफी states हैं जो trade को promote करते हैं, trade occupation उनकी list पे है. You need to meet their state requirement, but eventually you will at least get the 491. So mostly अब जो 189 और 190 से ज्यादा 491 की तरफ रुझान ज्यादा है सारे states का governments का. Right. Okay. I hope that answers the question. बाकी ये है कि मजीद भी जो भी हमारे पास आते रहेंगे issues or concerns or questions, we can compile them and then bring everything together in a program, or we can individually refer them to Aneel, and Aneel can respectively get back to the person asking the question. बहुत बहुत शुक्रिया Aneel. Enjoy the rest of the evening. Obviously tomorrow is work day for you, I suppose, or you're working from home? No, we're working from office, but we're not taking face-to-face appointments at the moment. But yes, we're working from office. Yeah. Okay. All right. Well, have a good night, or inshallah, we will catch up with you again. Inshallah. Thank you, Zuhair. Thank you. Khuda Hafiz. Allah Hafiz.